وكل يبغيان وبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان وبأي آلاء ربكما تكذبان. عيشي بلادي عاش اتحاد إماراتنا، عشتي لشعب دينه الإسلام هديه القرآن، حصنتك بسم الله يا وطن، بلادي 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 بلادي. Our next speaker is our Vice President and Mr. Mohammed Nafis. Bismillahirrahmanirrahim. His Excellency, Faisal Niaz Taghlidi, the new ambassador of Pakistan in UAE. I'm sure you must have met him by now. We also have His Excellency Consul General in Dubai, Hassan Abdul Khan Saab, and we also have Mr. Fakhruddin Diwan, Chairman FDCCI, come from Pakistan. Honorable Directors, members, you are most welcome. This is the first AGM of the new term 2023-24 with the new set of directors. I am the Executive Vice President, so I am representing him before you. In accordance with the BBC Constitution, a election monitoring committee was appointed in December to conduct the election of the Pakistan Business Council for the new term of 2 years, 2023-24. Mr. Waqas Elahi was the chairman of the committee, strictly in accordance with our constitution. And there were 11 nominations in the beginning. Later on, 4 new members have been drawn. Only 7 were left, and all the 7 were elected unopposed for the new term 2003-2024. The new board of directors, I will now let you know the name. Mr. Iqbal Dawood is our new president. My name is Mohammed Nafis. I am the Executive Vice President. Mr. Mustafa Hemani, our director. Continuing from last, Mr. Mustafa Hemani has been allocated the sector of investments, promoting investment in Pakistan. From Mr. Ijaz Ahmad, the director of food trade sector in UAE. New director, Mr. Salim Zakaria Tabani. He is from the real estate sector, Khan Mahmood, continuing also from last year. He will be Director, Management Training and Development. Mr. Mustafa Khwaja, he will the responsibility of Director, Startup Projects. He is planning to do and what they are planning for the next year. We have formed an expert committee to review all these suggestions. Ahmed Shekhari for leading the Pakistan Business Council in what was one of the most transformative 2 years that we've had. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Janab Safir Pakistan, Faisal Tirmizi Sahab, Consul General Dubai, Hassan Afzal Sahab, Pakistan UAE के प्रेसिडेंट, बिजनेस काउंसिल के जो प्रेसिडेंट हैं फखरुद्दीन दीवान साहब, हमारे चतुर्भुज भी हैं, वो तमाम डायरेक्टर्स, फॉर्मर और मौजूदा डायरेक्टर्स, तमाम मेंबरान पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल, अस्सलाम वालेकुम, शामिल। पिछले सालों में 2 सालों में एज अ प्रेसिडेंट मैंने अंजाम दिए। कोई भी काम जो है वो विदाउट टीम के नहीं हो सकता और मेरी खुशकिस्मती थी ये कि मेरे पास बहुत अच्छी टीम थी माशाल्लाह डायरेक्टर्स में। ऑल्दो कि मैं इन सब के मुकाबले में बहुत एज में कम था, लेकिन इन सब की रिस्पेक्ट, इनकी मोहब्बत ये थी कि जिस तरह की हम डिस्कस करते थे, मशवरे करते थे, जो हम स्ट्रेटजी बनाते थे वो सब मिलकर बनाते थे, सब मशवरों पे उसको हम स्ट्रेटजी को अमल करते थे। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो ये लास्ट 2 इयर्स गुजारे हैं ये बहुत सक्सेसफुल हैं इन पॉइंट ऑफ व्यू से कि हमने पेंडेमिक के फौरन बाद मैंने एज अ प्रेसिडेंट चार्ज संभाला था और बिजनेस की सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद जब मैंने टेकअप किया तो एक्सपो 2020 भी सर पे था और हमारी तैयारी भी कुछ नहीं थी, लेकिन
پاکستان کاؤنسلیٹ ایمبیسی کے تعاون سے اور ایکسپو 2020 کی جو ٹیم یہاں پر اپوائنٹ کی گئی تھی پاکستان پویلین کے اندر، اس ٹیم کے ساتھ مشترکہ طور پہ ہم نے مل کے جو بھی کام کیا ایکسپو 2020 کو پروموٹ کرنے کے لیے، پاکستانی بزنس کمیونٹی کو پروموٹ کرنے کے لیے، اس کے لیے ہمیں گورنمنٹ آف یو اے نے بھی سراہا، گورنمنٹ آف دبئی نے بھی سراہا، اور ایمبیسی اور کونسلیٹ نے بھی کافی تشکر ہمیں خطوط ہمیں لکھے کہ ہم نے بڑا اچھا کام کیا، اور یہ سب ہمارے ممبرس کی وجہ سے، ہمارے تمام ڈائریکٹرز کی وجہ سے ہوا، کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلیہ وسلم۔ ہز ایکسلنسی جناب فیصل ترمذی صاحب، ایمبیسڈر آف پاکستان ٹو یو اے ای، جناب حسن افضال صاحب، کونسل جنرل پاکستان دبئی، میرے چیئرمین اس وقت موجود نہیں ہیں، نفیس صاحب اور ایکٹنگ چیئرمین پاکستان بزنس کونسل، فارمر چیئرمین مسٹر احمد شیخانی صاحب، فارمر بورڈ آف ڈائریکٹر شبیر صاحب، عمران بھائی جا چکے ہیں یہاں سے، نیولی elected Director Pakistan Business Council, our other board members, respected members of Pakistan Business Council, brother and sister, Assalamu alaikum. His Excellency Mr. Faisal Tirmidhi صاحب، میں ابھی باہر ان سے یہی بات کر رہا تھا کہ ماشاءاللہ ابھی انہیں آفس جوائن کیے ہوئے تقریباً شاید 2 سے 3 ماہ گزرے ہیں، مگر جس تیزی سے اس وقت یہ کام کر رہے ہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ پرانے تمام ریکارڈ کو توڑیں گے انشاءاللہ۔ Being a business community ہمیشہ ایک ریڑھ کی ہڈی کا کردار ادا کرتی ہے۔ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کے تعاون سے، آپ لوگوں نے جس طرح سے ہم پر اعتماد کیا، اور نیو الیکٹڈ باڈی پاکستان بزنس کونسل فار دا ایئر 2023-2024 ہیز بین الیکٹڈ، اور میرے تمام برادران یہاں پر اس وقت موجود ہیں، تو آپ سب کا شکریہ، آپ کے تعاون کا شکریہ، آپ کے اعتماد کا شکریہ۔ انشاءاللہ جو لیگیسی ہمارے فارمر چیئرمین احمد شیخانی بھائی نے سٹارٹ کی تھی، جس طریقے سے ان کی لیڈرشپ میں پاکستان بزنس کونسل نے ایک نئے ہائٹ پر پہنچا تھا، انشاءاللہ اس لیگیسی کو ہم کنٹینیو کرتے ہوئے انشاءاللہ اور نہ صرف پاکستان بزنس کونسل کو آگے بڑھائیں گے بلکہ اپنے ملک کے نام کو، اس کے وقار کو، اس کو بھی انشاءاللہ ہم آگے لے کر جائیں گے۔ زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ ہم اگر چھوٹا ادا کر سکیں ہمیں وہ کردار ادا کرنا چاہیے۔ یہاں پر جو صرف دعا دیں، سچے دل سے دعا بھی صدقہ جاری ہے۔ ریپرزینٹنگ دا بزنس کمیونٹی آف پاکستان ان یو اے ای، our main lead to our brother Mr. Fakhruddin Diwan, Chairman Pakistan UAE, جناب محمد نفیس صاحب، مصطفیٰ رحمانی صاحب، احمد شیخانی صاحب، مصطفیٰ خواجہ صاحب، دیگر ممبران کونسل جنرل حسن افضل، دیگر ممبران پاکستان بزنس کونسل دبئی، سارے ہمارے میڈیا کے دوست، ان کا بڑا کلیدی کردار ہوتا ہے ایک میسج پروموٹ کرنے کے لیے۔ یہ میرے لیے بہت باعث افتخار ہے اور بڑی خوشی ہے، اور میرے لیے ایک بہت بڑا اعزاز ہے کہ میں آج کی شام آپ لوگوں کے ساتھ ہوں۔ جیسا کہ محمد نفیس صاحب نے بتایا، وہ کہ میں یہاں پہ آیا مجھے تقریباً 3 ماہ کے قریب عرصہ ہو گیا، اور آج سے 30 سال پہلے جب میں نے اپنی نوکری شروع کی تھی تو میرا جو پہلا ڈیسک تھا وہ گلف ریجن تھا، اور میری جو پہلی اسائنمنٹ تھی سرکار کی سرکاری طور پہ وہ وزٹ تھا لیٹ ہز ہائنس شیخ زاید بن سلطان النہیان کا۔ اس کے بعد میں یہاں پہ 2007 سے 10 میں رہا، اور تیسری بار مجھے ادھر آنے کا اعزاز ہے، جو میرے لیے بہت بڑا اعزاز ہے، کیونکہ اس ملک کے ساتھ ہمارے روابط اور دوستی بہت پرانی ہے۔ میں نے 2-3 جگہ پہ پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ ان کو آزادی ملی تھی 2 دسمبر 1971 کو۔ پاکستان نے اپنا پہلا سفیر نہیں تھا، پر اس کو 8 جون 1971 کو ان کو بھیجا جناب جمیل الدین حسن صاحب،
जो रिटायरमेंट के बाद ताहयात यहाँ के एडवाइज़र रहे थे वज़ारत ख़ारजा में। एक मैसेज मुझे कंसिस्टेंटली सब ने कहा कि एक ये हमारे सबसे बड़ी पाकिस्तानी कम्युनिटी है, 16 से 17 लाख पाकिस्तानी है, वो बहुत अहम है। और दूसरा उन्होंने कहा कि जी आपने बिजनेस टू बिजनेस ताल्लुकात करने, पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के साथ हुए थे आते, उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। और मैं आप लोगों के साथ मिलके, क्योंकि ये हमने मिलजुल के काम करना है, हमने यहाँ पे पाकिस्तानी तजारत बढ़ानी है। ऑलरेडी आपको खुशी होगी कि नामसाइद हालात के बावजूद पाकिस्तान और मुत्तहदा अरब इमारात की पिछले साल 21% हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ी है। यहाँ पे हम एक्सपोर्ट करते थे, उससे बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट करते, तो हमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को प्रमोट करना है। उसमें एक बहुत बड़ी जो नीश आ रही है, यहाँ पे भी मैं बड़ी कोशिश करूँगा, वो स्टार्टअप्स, फिनटेक्स, IT, उसमें हम लोग बहुत कर सकते हैं। और उसके अलावा मुझे कई लोगों ने अप्रोच किया, उन्होंने पाकिस्तान में भी कहा कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज, उनका हमें फुटप्रिंट बढ़ाना है और हमें अपना ऑलरेडी माशाल्लाह 16-17 लाख हमारे पाकिस्तानी यहाँ पे काम करें, पर आपको हाई एंड ज़्यादा क्वालिफाइड पाकिस्तानियों को लेकर आना है, ताकि ये सिलसिला जो पिछले 50-55 साल से चल रहा है उसको और तकवीत दी जाए। एक बात, क्योंकि आप लोग ही रीढ़ की हड्डी हैं। जब तक आप लोग बिजनेसेस में, मैन्युफैक्चरिंग में, ट्रेडिंग में काम करेंगे, वही हमें, हमारे मुल्क को, हमारे पूरे खत्ते को तकवीत बख्शेगा। मैं बहुत अपने लिए बहुत एहसास महसूस कर रहा हूँ कि मैं आपके आज के इवेंट में आया, और इंशाअल्लाह ये सिलसिला आज शुरू हुआ है और आगे तक चलेगा, आपकी दुआओं के साथ और आपके ताउन के साथ। इंशाअल्लाह पाकिस्तान UAE के ताल्लुकात तरक्की करेंगे और हमारे तजारती ताल्लुकात। I would like to especially thank all of you for coming over here and making this evening a success. I would also like to thank Mr. Fakhruddin, who flew all the way from Karachi to join us. I'm very thankful to you, sir. I would also like to thank the media, because the media has played always a very vital and a good role in covering all our projects. Thank you, media. Thank you for everything. I should not forget the efforts done by our office staff, because they play a very vital role in linking our members and the board. Mr. Shahid and Elmi, good job done. Thank you. And we are proud that each one contributed a really great effort. They put in the great effort, they were always available, and I really am thankful to all the team members. The last speech always is difficult, because you see, you are standing in between the friends and the food. So for the closing remarks, I would like to just add just a final note of symphony that brings all the elements together to create an impressive, harmonious conclusion. A wise leader knows the success is a continuous journey, not a destination. The best way to reach your goal is through consistency and dedication. Every single effort you make today can bring you one step closer to achieving great things in the future. So never forget to keep pushing forward and have faith in yourself and your team. We are totally committed to help our members grow in their respective fields. We are always available for the assistance. Let me assure you that me personally will be available for 1:1 meeting with all the members. Flower bouquet to welcome the ambassador to UAE from Pakistan. Thank you so much, His Excellency Hassan Abdul Khan Sahab. And Mr. Ali Rais. Where is Mr. Ali Rais? Thank you so much. You did a great job. Thank you so much. Small note, I would like for everyone, right after we get up, to meet one another, socialize with one another, because our ultimate purpose here is to get to know one another.
So I look forward to meeting each and every one of you. My name is Mustafa Sultan, and it was my pleasure to be your host tonight. And yes, please make your way to dinner. Thank you very much. एक IT सेक्टर का हो रहा है, उसमें भी मैं इनवाइटेड हूँ. जो भी बिजनेस काउंसिल्स तो यहाँ पे इलेक्टेड बॉडीज हैं, पर जिस सेक्टर ने भी मुझे बुलाया है मैं उन पर सब में फोकस कर रहा हूँ, और जो हमारे लिए फ़ायदा मंद है दोनों ममालिक के लिए मैं उस जगह पर जाऊँगा. आपकी एक्सपोर्ट बढ़ेगी तो तब आपका इक़्तिसादी हालात बहुत बेहतर. शारजा, अजमान, रासुल खैमा और दुबई से मेरी मीटिंग है अगले हफ्ते, और वो इस पे भी हम कह रहे हैं कि ये एक तो यूएई के इन्वेस्टर्स पाकिस्तान में जाएं, और यहाँ पे भी हम मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ बन रही हैं जिससे हम री एक्सपोर्ट कर सकते हैं. जैसे मैंने फार्मास्यूटिकल कंपनीज को अप्रोच किया है पाकिस्तान में कि जी आप एक तो यहाँ पे आपकी बहुत कम प्रेजेंस है. मैं कहा आप यहाँ पे हैं फार्मास्यूटिकल सेक्टर में, इस सिलसिले में भी मैं आई एम वर्किंग. अभी कैनेडियन बिजनेस काउंसिल ने हमें अप्रोच किया कि हम आपके साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, तो इंशाल्लाह वी आर वर्किंग ऑल द बिजनेस काउंसिल. इसके मिलने से ये होता है कि एक दूसरे के साथ तिजारत बढ़ती है. बिजनेस काउंसिल का एक ही मकसद है, बस तिजारत को किस तरह बढ़ाएं. देखिए, जैसे नफी साहब ने कहा कि एज पर द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स की गाइडलाइंस है उसके हिसाब से जो है हम सब कमेटीज बना रहे हैं. यहाँ पे जितने भी हमारे इन्वेस्टर्स हैं, जैसे चाहे रियल एस्टेट है, चाहे फूड स्टफ है, इवन टूरिज्म है, तो हम अपने मेंबर्स को दावत देंगे कि वो आगे आए, सब कमेटीज बनाने में हमारा साथ दें. इसके दो फायदे होते हैं. एक तो सब कमेटीज के साथ साथ तमाम मेंबर्स जो यहाँ पे पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के इस वक्त जो है वो अपने आप को ज्यादा एक्टिव करेंगे, वो ओन करेंगे पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल को, एंड फ्यूचर में दे कैन बिकम अ डायरेक्टर ऑफ पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल. मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं यहाँ पर 1995 से हूँ, और 2008 में मैं यहाँ से इन्वेस्टमेंट लेके अपने लिए इन्वेस्टमेंट लेके पाकिस्तान पर गया, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बड़ी बरकत दी. तो जिस तरह से अल्लाह ने मुझे कामयाबी अता की, तो मैं चाहूँगा कि न सिर्फ मेरे भाइयों को मिले बल्कि पाकिस्तान को भी कामयाबी मिले. देखिए, पाकिस्तान जैसा भी नफी साहब ने कहा कि इस इन्वेस्टर पैराडाइज जो सबसे पहला कदम करे, मैंने भी सफी साहब से भी इस सिलसिले में बात की थी, जो सबसे पहला कदम है हम पाकिस्तान के एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन को हम यहाँ पर प्रमोट करने जा रहे हैं. इस सिलसिले में हमने मेरी चेयरमैन साहब से कल ही बात हुई है. इंशाल्लाह वो पाकिस्तान यहाँ यूएई के दौरे पर आ रहे हैं नेक्स्ट मंथ. तो यहाँ के वो जो हमारे जो एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जो यहाँ पे फ्री जोन जैसे कराची का है, सियालकोट है, रिसालपुर है, ग्वादर है, सून आई विल बी ऑन द बोर्ड ऑफ एब्जा. तो चेयरमैन साहब यहाँ पर आएंगे तो हम अपने फ्री जोन को प्रमोट करना चाहते हैं. देखिए, इस वक्त जाब्जा जो है 33% ऑफ जीडीपी को कंट्रीब्यूट कर रहा है, जबकि अनफॉर्चुनेटली हमारा पाकिस्तान जो है वो इस हद तक अभी कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है. मैं आपको छोटी सी बात बताऊं कि इस वक्त पाकिस्तान का जो एक्सपोर्ट है वो 32 बिलियन है, जबकि पूरे पाकिस्तान का एक्सपोर्ट 32 बिलियन है. और इस वक्त जो कराची एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन है वो इस वक्त टोटल 300 एकड़ के ऊपर है. 300 एकड़ का जो एक्सपोर्ट है वो 1 बिलियन है. आप समझ सकते हैं कि पूरे पाकिस्तान 32 और 300 एकड़ 1 बिलियन है, तो इसके अंदर इतना पोटेंशियल है. इसी सिलसिले में मिनिस्टर साहब से भी बात हुई है, पीएम साहब से भी बात हुई है, हमारे सजेशन जा रहे हैं एम्बेसडर साहब.